Warm welcome, dear friends. Welcome to you all 40th day of this Jaagriti program. Very, very important completion day today, important day. And today I'll be taking help of Shubhangi ji for translation. Yes, namaste, sir. Hello, Shubhangi. Hello, Hitesh ji. Wonderful, wonderful. Very happy to find all the friends here. Dr. Jayesh, it's nice to see you, sir. That's wonderful. And let's begin today, friends. So you all have gone through these 39 days of wisdom sharing from QLU Acharyas. And it's I heard it's going very well. I keep getting the feedback from YouTube through your comments. And it's so good to hear from all of you that is going very well. And today also I have chosen a topic for you. Samsara and Nirvana. That's the topic. तो दोस्तों सर कह रहे हैं जो हमने ये यात्रा शुरू करी है ध्यान की और आज हम आखिरी दिन पर है 40वें दिन पर है और सर ने देखा जो भी हमें यहाँ पे ज्ञान और ध्यान हमने किया मिलकर कि सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। सर ने देखा है YouTube पर और हर जगह पर जो सोशल मीडिया है कि आप सब इस ध्यान को और फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और आज का जो टॉपिक सर ने चुना है वो है संसार और निर्वाण। When we hear these words samsara and nirvana, samsar and nirvana, we have our own impressions about these two words. Samsara is boring and samsara is full of suffering. Get away from samsara. And when you think about nirvana, you feel, oh, it's unreachable, unattainable, somewhere far away. And we have certain impressions. Each one of us have our own impressions about it. जब हम ये दो शब्द के बारे में सुनते हैं जो है संसार और निर्वाण, जब संसार का हम सुनते हैं, संसार के बारे में जानते हैं, तो हमें लगता है कि संसार कितना बोरिंग है, जिसमें कोई उत्साह नहीं है, या वहां पर बहुत सारी सफरिंग है, जिसे हम कहते हैं कि बहुत सारा दर्द है, बहुत सारी तकलीफें हैं संसार में। और जब हम निर्वाण की बात करते हैं तो हमें लगता है ये वो है जो हम कभी पा नहीं सकते, जो हमसे बहुत दूर है। तो ये छवि रहती है हमारी इन दो शब्दों को लेकर। It appears to be that samsara and nirvana are two opposites, two polarities, and they contradict each other. It appears to be that way. हमें लगता है कि संसार और निर्वाण एक पूरब है तो एक पश्चिम है, बहुत दूर लगता है और हमें लगता है कि दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, दोनों एक फाइट जैसे कह सकते हैं कि दोनों अलग हैं, बिल्कुल एक साथ नहीं है संसार और निर्वाण। Some of us who feels that I need to attain nirvana, I need to attain enlightened state, and I need to have moksha and mukti, and they try to give up everything. They try to run away from samsara. They want to renounce everything about the material world, samsaric world.
And that's what we do generally. जब हम निर्वाण पाना चाहते हैं तो हम सब कुछ छोड़ देते हैं, हम संसार को छोड़ देते हैं और हमें लगता है वो छोड़कर हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, हमें मोक्ष मिलेगा। और ऐसे ही हम सब करते हैं, सब कुछ छोड़ के निर्वाण को पाने लगते हैं। And some, they are very fearful about the suffering that they experience in the material world. Because definitely we see suffering everywhere and we also go through some suffering. And nobody wants to suffer. One of the human tendencies or reactions is to avoid suffering. बहुत दूर जाना है suffering से. That's what we feel. All of us we feel. एब्सोल्युटली, जैसे आप सबने सुना, ये सर ने कहा कि हम बहुत दूर जाना चाहते हैं और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि इन सफरिंग को छोड़ के हम कहीं भाग जाए, कहीं दूर चले जाए कि जहां पर ये सफरिंग ना हो जो हमें संसार में मिलती है। So definitely we find suffering everywhere. This is what every human being discovers in their life, their own personal suffering. Also, they see suffering everywhere, collective suffering also. There's no happy people in the world. Everyone is going through something or other, some stress or other, some fear or other, some pattern or other. There is full of suffering. We don't find people who are happy, joyful. yes. तो जो हम अपने स्वयं की एक सफरिंग होती है कि हम अपने जीवन को लेके, स्वयं को लेके सफरिंग ढूंढते हैं, और एक सफरिंग होती है जो सामूहिक सफरिंग है, जो हम आसपास जीवन में देखते हैं, संसार में देखते हैं कि लोग इस सफरिंग से कैसे सफर कर रहे हैं। तो इन सफरिंग्स को हम सारे कहीं नोटिस करते हैं और हमें लगता है कि यही सफरिंग है, सारे कहीं सफरिंग है और जीवन ही पूरा इन्हीं सफरिंग से भरा हुआ है। We get so much identified with samsara because that's what we have been experienced. We do not know any other experience other than samsaric experience, the worldly experiences, mainly duality, mainly the suffering and pain. Of course, some kind of pleasure comes, some kind of joy also comes. Sometimes a relief from the suffering also we feel it's a joyful state. तो हम इस संसार में, इस भौतिक जीवन में हम इसी में ही दुविधा में फंसे रहते हैं, ये सफरिंग की, और इस सफरिंग को ही हम सच मानकर, या फिर कभी कभी दिन ऐसा लगता है कि यही सिर्फ संसार है सफरिंग का ही, इसके अलावा कुछ और नहीं है। और हम इस सफरिंग को, कभी कभी हमें सफरिंग अच्छी भी लगती है, जब हम सफरिंग से दूर हो जाते हैं जीवन में तो हमें जॉय मिलता है, जो खुशी मिलती है, हम उसमें खुश हो जाते हैं, हमें लगता है यही है वो संसार जो हमें चाहिए। तो कभी हम बहुत अटैच हो जाते हैं, हम जुड़ जाते हैं अपनी सफरिंग के साथ, और छोटी जो खुशी मिलती है इस सफरिंग से, थोड़ी सी जो खुशी मिलती है, हम उसी खुशी में खुश हो जाते हैं कि यही अल्टीमेट है। So we feel that in the first, kind of people, they think that samsara is the only reality. There is no other reality or other state of experience that is possible. And samsara is the only real. Samsara is real. Only thing that is real is samsara, nothing else. This material world where all the suffering comes and also all the pleasures also can come,
suffering and pleasure, they both come together. That's what we believe because we get too much caught in that and identified with it. एक तरीके के जो धारणाएं हम बनाते हैं कि संसार ही यही जीवन है, जहाँ पे सफरिंग भी है और प्लेजर भी है, दोनों चीजें साथ में है, और यही रियलिटी को ही हम इसके रचयिता बन जाते हैं कि यही सिर्फ जीवन है, कि जहाँ पर हम भौतिक जीवन अपने मटीरियलिस्टिक जो चीजों के साथ है जीवन, कि वस्तुओं के साथ जुड़ जाना, लोगों के साथ जुड़ जाना, यही हम संसार मान लेते हैं. Some believe that this samsara is very unreal. It is illusion because they go through so many kind of disillusionments, disappointments. They intend something, but it won't happen according to their intentions, according to their desires. So what happens is they get disillusioned. For example, everyone wants happiness, joy. But in spite of all the material things that we accumulate, all that we, earn, whether it is money or some possessions, but still we get disillusioned. We will be utterly disillusioned because we'll not be getting that joy that we are seeking. और दूसरे तरह के लोग होते हैं जो सोचते हैं कि जो संसार है वो रियल नहीं है, वो सच नहीं है, और उन्हें लगता है कि जो ये मटेरियलिस्टिक, जो भौतिक जीवन में हम ये चीजों के साथ जो हमें चीजें मिलती हैं, ये सब क्या है, ये माया है, ये इल्यूजन है जो हमें रोकती है, और हम इसी के भीतर खुशी को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि हर जन एक खुशी चाहता है, और जब हमें वो खुशी नहीं मिलती, अनहैप्पीनेस मिलती है, तो हमें लगता है कि वो सच नहीं है, ये जो संसार है ये रियल नहीं है. And we feel this samsara is very unholy, and also because it is illusory. And we feel that Nirvana is the only reality. Nirvana is only real. And I should completely reject samsara, the material world, the physical plane, and go towards only the spiritual plane, nirvanic plane. So nirvana is real. That's what is the third category of people believe that. और तीसरी तरह के लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि निर्वाण ही रियल संसार है, क्योंकि हमें लगता है कि वहां जो ये भौतिक जीवन है ये शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है, अनहोली है. इसीलिए हम निर्वाण की ओर जाते हैं कि संसार को छोड़ के निर्वाण को पाना, क्योंकि वही अल्टीमेट सत्य है, और संसार एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, एक माया है जो हमें बांध के रखती है. And then this nirvana, for nirvana, to attain nirvana, many, they completely renounce the world, and they will be pulled towards some spiritual path and spiritual discipline, and then, but deep within their souls, in their hearts, they miss the warmthness of samsara. I give you one analogy. You are near a fire camp, a fireplace. By the side of the fire camp, you feel a certain warmthness. If you are too close to it, you feel it is burning your skin. If it is too far away, you feel cold. You feel far distanced from that fire. So in this analogy, we can understand
that more you pull away yourself away from samsara, only nirvana, considering that is the highest, then you don't feel the warmthness here as long as you live in the physical plane. तो जब हम सब कुछ छोड़कर निर्वाण को पाते हैं, हमें लगता है निर्वाण ही सत्य है जिसे हमें पाना है, और हम संसार को छोड़ के निर्वाण की यात्रा में चले जाते हैं। और उदाहरण के तौर पर जैसे सर कह रहे हैं कि आप सोचिए कि एक बॉनफायर, जैसे हम रात को आग लगाते हैं, कैंपिंग के लिए जाते हैं, तो अगर हम वहां बैठे होंगे थोड़ी आग से थोड़ी दूरी पर, तो हम उसकी वार्मथ को, उसकी एक जो सूदिंग मैं कहूंगी, जो आरामदायक गर्मी होगी, उसको आप महसूस करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। पर अगर आप आग के करीब चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि आग आपको जल रही है, जलने वाली फीलिंग आएगी आपको। और अगर आप उस आग से दूर चले जाते हैं, थोड़ी और दूर चले जाते हैं, तो आपको ठंड महसूस होएगी, क्योंकि आप वो वार्मथ को फील नहीं कर पा रहे। तो ऐसे ही है दोस्तों निर्वाण और संसार की बात। संसार में जब हम रहते हैं तो हमें वार्मथ फील होती है, वार्मथ अपने परिवारजनों से प्यार मिलता है, तो वो हम फील कर पाते हैं। और अगर हमें लगता है कि निर्वाण क्या है, वो दूर चले जाना उस वार्मथ से, जब हम दूर चले जाते हैं तो वो निर्वाण फील होती है। जब हमें ठंड महसूस होती है, हम उस वार्मथ को फील नहीं कर पाते जो निर्वाण में हमें महसूस होती है, कि हम उसको फील नहीं कर पाते जो संसार में है। Many, they are confused about these two kinds of paths, samsara path or nirvana path, which one to take. And if they go indulge too much in samsara, they don't know about what is also no, the other perspective, other side, and the other dimension of life. If they are only indulging in nirvana and excluding samsara, they also miss something very valuable. तो हम इसी दुविधा में रहते हैं कि कौन से रास्ते पर चले, क्या हम संसार में जाएं या फिर हम निर्वाण में जाएं। तो हमें यही देखना है कि क्या दोनों में हम अगर संसार में ही रहते हैं तो हम जीवन का दूसरा पहलू को छोड़ देते हैं जो है निर्वाण, और अगर हम निर्वाण को ही पाते हैं तो बहुत जरूरी जो हिस्सा है जीवन का, संसार, हम उसे छोड़ देते हैं। तो दोनों में हम कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं अगर हम एक्सट्रीम्स में जीते हैं, या तो संसार में ही या फिर निर्वाण में ही। I call this as a journey, a beautiful journey. First, we will be so deeply attracted to the samsara, seeking pleasures, joys of samsara, very attractive. All things about the world, material world, very attractive, and definitely we have a lot of fun about it. But soon, very soon, we also find that everything that I am holding or clinging, it's also going to disappear. It's also going to change. We keep having that fear of losing, and even the suffering also creeps in. Many challenges that comes in the physical plane. And it's a very natural pathway or journey. For example, we go to the second stage. First stage is only material world is correct. This is only the reality. I will go and earn money, and I will, uh,
be merry and eat, drink, and sleep and enjoy, masti karna in the material plane. And that is the only reality, and that's what we believe. The first beginning of the journey. सर कह रहे हैं मैं इसे एक जीवन की बहुत सुंदर यात्रा कहूंगा कि जब हम इस यात्रा में शुरू होते हैं, जिसे हम पहली स्टेज कह सकते हैं, कि हमें लगता है कि ये भौतिक जीवन ही सत्य का जीवन है और इस जीवन में हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं जिसे हम खुशी देती है, हमें प्लेजर देती है, हमें लगता है कि यही है अल्टीमेट हैप्पीनेस। पर जैसे जैसे चीजें हम जीवन में अचीव करने लगते हैं, हमें गाड़ी, अगर उदाहरण के तौर पे घर मिलता है, हमें खुशी मिलती है, हमें गाड़ी हमारी बढ़ती है तो हमें खुशी मिलती है, पर फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब हमें लगता है कि ये हमारे साथ जीवन भर नहीं रहने वाला। घर अगर बात करें, क्या वो मेरे साथ जीवन भर चलेगा? अगर मैं चली भी जाऊंगी दुनिया से तो क्या वो मुझे वो खुशी देगा? कुछ देर तक की हमें खुशी मिलती है, पर वो जो खुशी हमें जो निरंतर चलती है, वो खुशी से हमें खुशी नहीं मिलती। तो ये स्टेज है और हम सब इसी से ही गुजरते हैं, इस पहली स्टेज से, कि हमें भौतिक जीवन में प्लेजर, हैप्पीनेस मिलने लगती है चीजों को लेकर। And we step into the second stage of disillusionment about the samsara, where we feel samsara is very unreal. This is unreal. This is Maya. And I want to run away. I want to go away from samsara. And our really search really begins. Search for real happiness or joy, or the joy that never going to go away. The joy that going to stay with us forever. और दूसरी स्टेज पे जब हम जाते हैं, हमें लगता है कि ये सब कुछ अनरियल है, ये माया है जो हमें अपनी चीजों में बांध कर रख रही है इस संसार में, और हम छोड़कर जाना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं अपने स्वयं को और अपने रियल हैप्पीनेस को, कि जो निरंतर चिरकाल तक मेरे साथ चलती रहे। उसके लिए हम सब कुछ छोड़ के भागना चाहते हैं। ये है दूसरी स्टेज। And the third stage, where we feel that now I want to really dive into the nirvana, wherever it is, and we do all those practices. We find that nirvanic state. Nirvana can be defined as, continuous, uninterrupted joy, the joy that is not going to go away from you. It's forever joy. And that we will be knowing that it is the only real. और तीसरी स्टेज है निर्वाण की। जब हम निर्वाण को ढूंढते हैं और उस निर्वाण ही हमें सत्य है, जो हमें बताता है कि यही रियल है, यही सत्य है, और हम इसी को ही पाते हैं। And but this is not the end of the story, end of the journey, because there's one more step. The last step. This is the step which is very, very essential. To know that your nirvana cannot be sustained without embracing the samsara, without knowing that samsara has provided the groundwork or the platform for you to know the real nirvana experience. I can say in a short form, in analogy form, without mud, there is no lotus. Without suffering, there is no enlightenment. Without samsara, there is no nirvana. तो
दोस्तों, जो तीसरी स्टेज है, हम उसी को ही वहीं पे ही अपनी यात्रा सोचते हैं कि खत्म हो गई है। जब हम निर्वाण को पा लेते हैं या हमें लगता है कि वो खुशी मिल गई है जो निरंतर चलती रहती है, किसी चीज पे निर्भर नहीं है, और कि चिरकाल तक वो खुशी हमें, वो जॉय हमें मिलता है निर्वाण में। पर ये आखिरी स्टेज नहीं है, इससे एक और स्टेज ऊपर जो है वो है जब हम जानते हैं कि हमें निर्वाण में रहकर, अगर हम निर्वाण को पा चुके हैं, तो हमें संसार को भी पूरी तरीके से अपने जीवन में उसको एम्ब्रेस करना है, उसको एक साथ करना है। निर्वाण और संसार दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। आप संसार में रहकर भी निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। ये है सबसे आखिरी स्टेज, जिसमें आपको पता चले, जैसे सर कह रहे हैं कि अगर अगर सफरिंग नहीं होगी, अगर जहां पेन नहीं होगा, तो वहां पे प्यार भी नहीं होगा। तो हमें टेस्ट करना पड़ता है दोनों चीजों को। अगर मड नहीं है, सोचिए, तो लोटस नहीं होगा। अगर हम मड को अगर गंदा समझते हैं, तो फिर लोटस भी उसमें से नहीं निकलेगा। तो वैसे ही संसार और निर्वाण दोनों एक ही है, और हम जीवन में दोनों को हमें अपनाना है, दोनों से भागना नहीं है। So, dear friends, if you look into your own experiences of your life, you can easily find your own map. In the map, you will find this graph where the material pull towards the material experiences will be so much saturated with the material experiences, even will be exhausted with those worldly experiences. And then our spiritual search began, and we want to find out about the real Nirvana, what is Nirvana, and we'll be diving into that. And during that time, a temporary phase will be there for sadhaks, practitioners, that we put aside samsara. Oh, I want to retire from my job. I want to, um, you know, live alone in a cave on a mountain. I don't want to be with my family because it's a distraction. Family is a distraction, and the world is a distraction. Oh, world is full of noise. I will go and meditate in the forest. I will go and meditate in the mountain or the cave or the riverside. So this is what we feel. तो हम देख सकते हैं कि इस ग्राफ में कि हम कहाँ अपने जीवन को लेकर जा रहे हैं। क्या हम भौतिक जीवन में अभी भी फंसे हुए हैं, जहां हमें खुशी मिल रही है चीजों को पाने में, या फिर हमें लगता है कि ये जो संसार है ये बहुत ही यहाँ पे सफरिंग है, मुझे इसको छोड़ना है। और लगता है कि यही है कि जहाँ पे परिवार में दुख है, दर्द है, मुझे परिवार को छोड़ना है, और मुझे कहीं दूर निर्वाण पाने के लिए कहीं केव में, किसी गुफा में जाना है, जहां पे मुझे शांति मिल पाए, जहां मैं सुकून से निर्वाण को प्राप्त कर पाऊं, मोक्ष को प्राप्त कर पाऊं। या फिर हम निर्वाण में पूरी तरह, किसी अंदर से ये प्रश्न आता है कि अब मुझे अपने आप को जानना है, तो हम किसी आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं जहां हम निर्वाण को ढूंढना चाहते हैं, और बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, बहुत सारी चीजों में जाते हैं जिससे हम जान पाए कि निर्वाण क्या है, और हम उसको पाने की कोशिश करते हैं। Many they feel that the nirvana is the most exalted or the highest state, and if I come in contact with the material world again, I'll be contaminated. Somewhere I will lose everything about my the greater enlightenment or the nirvanic state. It is so untrue. If your nirvana goes away because you danced that day with your wife, or you were going and having some kind of fun on the streets,
And that is not nirvana. If the nirvana can go away just because you are in the material world, and that is not nirvana. हमें लगता है कि निर्वाण एक बहुत ऊंची ऊर्जा है, एक हाईएस्ट पॉइंट है एनर्जी का। और जब हम मटेरियलिस्टिक भौतिक वर्ल्ड में आते हैं और हमें लगता है या फिर हम इंजॉय कर रहे हैं लाइफ में, या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो मेरी ऊर्जा जो है वो क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैं निर्वाण में हूँ और मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ, तो वो मुझे कहीं ना कहीं मेरी ऊर्जा मेरे निर्वाण को मुझसे दूर ले जाएगी। और हमें लगता है कि ये अनरियल है, ये संसार में रहना, तो हमें निर्वाण में ही रहना है। So many have these kind of misconceptions, beliefs, some distorted beliefs that the samsara will take me away from the real goal of attaining nirvana or my nirvanic state. And we feel it is a very lesser or lower state, the samsara state, where the worldly stuff is very low and less compared to nirvana. तो ऐसी ही हमने लोगों ने धारणाएं बनाई हुई है कि जो निर्वाण है वो ऊंचा है, ऊंचे स्तर पर है, और जो संसार है वो बहुत ही नीचे स्तर पर है। और ये धारणा से ही हम जीवन को चलाते हैं कि हमें ये सब से निकलकर बाहर जाना है, तभी हम निर्वाण को पा सकते हैं, या फिर निर्वाण की उस अवस्था को हम मेंटेन कर सकते हैं जब हम भौतिक जीवन को बिल्कुल छोड़ देंगे, उन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। So what is most important is to understand that you can't exclude anything. Samsara and nirvana are two integral parts of the same oneness and integral part of our experience. We have chosen to come down to earth plane to have this material existence. We want to feel and experience this body, flesh experience, the body experience, and remember that we are the soul, we are souls living inside the body. We chosen this adventure. This samsara is a beautiful adventure. Nirvana is a beautiful adventure. We have chosen that. By excluding any of them, it is an incomplete experience. तो दोस्तों, हम जीवन में किसी को भी हमें बाहर नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। दोनों को हमें इंक्लूड करना है, चाहे वो संसार हो, चाहे वो निर्वाण हो। क्योंकि अगर देखें, जिस परम शक्ति से, जिस उस ऊर्जा से जिससे हम सब बने हैं, उसी में से ही इन दोनों की भी रचना हुई है, संसार की भी और निर्वाण की भी। तो दोनों में वो ही ऊर्जा है, तो कोई भी किसी से क्षीण या ज्यादा नहीं है। हम दोनों को हमें अपने जीवन में लेकर आना है, और दोनों को साथ रहकर हम चाहे संसार में रहकर भी हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करना है। तो ये देखना है कि दोनों हमें अपने जीवन की ये यात्रा है जो हमने चुनी है, इस मनुष्य जीवन में आने के लिए किसी ने हमें धक्का नहीं दिया या बोला नहीं कि जाओ। तो हमें इस ह्यूमन जो ये भौतिक जीवन हमें मिला है, हमें इसका अनुभव करना है, इसको छोड़ना नहीं है। और इस मनुष्य जो शरीर हमें मिला है और इसके भीतर जो आत्मा है, जो सोल है, जो निर्वाण को रियल हमारा गोल है, तो वो बताती है। तो दोनों ही हमारे संसार और निर्वाण भीतर ही है, और हम रहकर इन दोनों को प्राप्त कर सकते हैं।
So samsara is equally important, like nirvana, for everyone. And the fourth stage, a practitioner, a spiritual practitioner, will come arrive at that point, understanding that samsara and nirvana are not two different things, are not opposites, and nirvana can be lived in samsara. Nirvanic state can be retained even in the middle of all that beautiful experiences of the material world. तो दोस्तों, जो चौथी स्टेज है जो हमें बताती है कि निर्वाण और संसार ऑपोजिट नहीं है, एक दूसरे के पूरक नहीं है, एक साथ ही है। तो हम संसार में रहकर भी निर्वाण को प्राप्ति कर सकते हैं, और निर्वाण को जो स्थिति है उसको भी हम इक्वली मेंटेन कर सकते हैं। संसार के जीवन में जो भी भौतिक जीवन में चुनौतियां आए उसका भी हम सामना कर सकते हैं इस निर्वाण को पाकर भी। So there is a Zen beautiful concept from the Zen masters, Zen tradition. It's called 10 bulls concept. 10 ox herdings, 10 in the form of 10 stages, how a person searches for this bull in the forest. And it is beautifully depicted in that, the entire samsara and the nirvana. For example, in the beginning, our search is to find where is the bull, where is the tiger. We go to a forest and to find that. And initially, we'll not find, we'll only find the footprints. And if we are keenly looking at, we'll find the tail of the tiger or the tail of the bull. So, जो zen मास्टर है उन्होंने एक मैं कहूंगी एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं हम 10 बुल्स, 10 बैलों का 10 बुल्स कॉन्सेप्ट है। 10 बैल कि अगर कोई बैल को ढूंढने लगता है तो इन 10 स्टेजेस से वो गुजरता है। तो पहली जो स्टेज है कि जब वो ढूंढता है कि बैल कहाँ पर है या शेर कहाँ पर है, और जब वो जंगल में ढूंढने जाता है तो उसको वो बैल नहीं मिलता, वो शेर नहीं मिलता, उसको सिर्फ उसके चिन्ह, पैरों के चिन्ह दिखाई देते हैं या फिर उसकी पूंछ दिखाई देती है। तो वो है पहली स्टेज। We'll be very happy to see the tail or the footprints initially, and we'll be more curious, more interested, more absorbed. We want to find out where is the bull, and behind the tree and behind the bushes, and we go and we'll find it out. And we find now the half body of the tiger. We'll see, we spot it, we see it from a close distance. तो जब हम उनके चिन्हों को देख लेते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है कि हम शेर को देख सकते हैं, या अब हमें और ढूंढना है कि शेर यहीं कहीं है तो हम उसे पेड़ों के पीछे, बुशेस के पीछे ढूंढते हैं कि कहाँ है शेर छुपा हुआ, और फिर हम आधा शरीर देख पाते हैं शेर का एक डिस्टेंस से, और हमें लगता है कि हाँ वो है शेर। Then we try to overcome that fear, because the tiger is ferocious, and how if we come closer to the tiger, it might attack me. I might lose my life, and what will happen? We get some kind of terrible fear. Even that bull, wild bull in the forest, will be so terribly fearful in that moment.
and we try to overcome that fear. और फिर जब हमें आधा शरीर दिखता है तो हमारे भीतर से डर भी आने लगता है कि क्योंकि अगर शेर को अगर मैं सामना करूंगा तो कहीं वो मुझे खा ना जाए या मुझ पे अटैक करे। सेम वे बैल को भी, जो वाइल्ड बैल होता है वो भी बहुत खतरनाक होता है, तो उसको देखकर भी हमारे अंदर ये डर उत्पन्न होने लगेंगे और हमें होगा इस डर पे मुझे ओवरकम करना है, इसको पार करना है, तो वो स्टेज रहेगी। Then once you overcome the fear, you come closer to that tiger, and you will also ride the tiger also. You'll be sitting on it, you'll be happy, and you'll be roaming around the forest, riding on the tiger or riding on the bull. जब आप अपने डर पे काम कर लेंगे, फिर आप उस शेर के पास जाएंगे और आप, हो सकता है कि आप उसके ऊपर सवारी करें, उस पर बैठ जाएं, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और आप उस शेर पर बैठ के आसपास जंगल में घूमेंगे, इधर उधर जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे, ढूंढेंगे, चीजों को देखेंगे शेर के ऊपर बैठकर। You will start taming the tiger, taming that bull. Even you'll tie a rope and you say, now stay calm here, stay peaceful here. And we tame it, we master that. Yes. और फिर होगा कि हम जो शेर है या बुल है, हम उसे बांध कर उसको बताएंगे कि अब तुम्हें शांत बैठना है, अब तुम यहाँ पर बैठो, आराम से बैठो। तो हम उसको डिसिप्लिन में कहूंगी कि बताना चाहेंगे, अब ये टाइम है तुम्हारे आराम का, बैठने का, तो तुम अब बैठो, शेर को और बैल को हम कहेंगे। So in this metaphor, if you understand rightly, this bull or the tiger represents the truth or the nirvana, enlightened state. So after you achieve, you master it, you is part of you now. And what you decide, the last moment is to come back to the world where you are part of the world. And before you are part of the world, you want to share with people, you want to come back to the world with your nirvana, with your truth that you have found. तो दोस्तों, जो ये शेर और जो ये बैल है, ये रूपक है हमारा, ये हमें बताता है निर्वाण के बारे में, कि जब हमें निर्वाण की प्राप्ति होती है तो हम वापस से संसार में जाना चाहते हैं और हम संसार में जाकर हर व्यक्ति से ये जो निर्वाण की प्राप्ति हमें मिली है, हम दूसरों को बताना चाहते हैं कि देखो, अगर मैं निर्वाण को प्राप्त कर सकता हूं तो आप सब भी कर सकते हैं, अपने इस डर पे काम कर कर। तो वापस से वो संसार में आना चाहेंगे, निर्वाण को अपने साथ लेकर। So you will be coming back to the place where you have started your journey before, and laughing and dancing and singing. You are now mingling with all the people now, with your smile, with your dance, with your song. जब आप वापस आएंगे तो आप वो खुशी, जो उत्साह आपके जीवन में आएगा, आप वो सबके साथ बांटना चाहेंगे, सबको बताना चाहेंगे, सबके साथ रहना चाहेंगे और आप इसको एक सेलिब्रेशन के जैसे, उत्साह के जैसे आप जीवन को जीने लगेंगे और दूसरों के साथ और गहरा जुड़ने लगेंगे। So dear friends, Samsara then is equal to Nirvana. Nirvana is equal to Samsara, and you will live in the Samsara as a Nirvanic being because it gets integrated into you, these two experiences. तो दोस्तों, अब संसार बराबर है निर्वाण के और निर्वाण बराबर है संसार के।
कोई भी कम और ज्यादा नहीं है, दोनों ही बराबर है। तो जब हम जीवन में इन दोनों ऊर्जा, इन दोनों शक्तियों को बराबर इनको जीवन में जीने लगते हैं, वो ही सही स्वरूप है हमारा। संसार और निर्वाण दोनों को साथ में लेकर चलना। We feel the joy in simple, ordinary things like walking, sunrise, sunset, singing, dancing, sipping the tea, masala chai, all that we have, everything becomes a nirvanic experience. तो दोस्तों, जो बहुत ही साधारण चीजें लगती हैं हमें जीवन में, हमें उसमें भी वही शक्ति, वो निर्वाण को जब हम प्राप्त कर लेते हैं, तो वो हमें फॉरएवर अल्टीमेट खुशी देता है। चाहे वो चलना हो, चाहे वो चाय पीनी हो, मसाला चाय पीनी हो, या कुछ भी, जो भी आप सरल चीजों में भी आपको वो उत्साह देगी, वो खुशी देगी जो अल्टीमेट होगी। So, dear friends, many of us, we stop ourselves being joyful in this moment, experiencing all the joy that is possible in this moment, because we fear that if I am too indulging in this joy of this material world, I will never attain nirvana. We have that fear that I will not attain the nirvana. I will not be enlightened. And many of us have this kind of misconception. तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम खुश रहना छोड़ देते हैं, खुश रहते नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम खुश रहेंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा हम भौतिक जीवन में ही ना रह जाएं। इस खुशी को हम बांध कर रखते हैं। हमें लगता है कि ज्यादा हम अटैच हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तो हम फंस जाएंगे इसी संसार में, हमें निर्वाण नहीं मिलेगा। ये एक मिसकंसेप्शन है, ये ऐसी धारणा है जो हमें छोड़नी है कि ऐसा नहीं है। जितने आप खुश होंगे, एंजॉय करेंगे, आप निर्वाण को भी उस स्थिति में रह सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। So this is the path called path of inclusivity. No experience can be excluded because it has some consequences. If we exclude anything, it comes back much more intensely. It bounces back to us. So if you reject samsara because you are in the pursuit of nirvana, you will be pulled more and more into the samsara, into the patterns, into the whirlpools, into the all the ebbs and tides of samsara. तो दोस्तों, ये रास्ता है इंक्लूजन का, जिसमें हम सब चीज को सम्मिलित करें, किसी को भी एक्सक्लूड ना करें, चाहे वो संसार है, चाहे वो निर्वाण है। और दूसरा हमें करना है कि जो भी अनुभव हो रहा है हमें इस रास्ते पर, उसको भी हमें इंक्लूड करना है, जज नहीं करना है कि ये कैसा हो रहा है अनुभव। तो दोनों को हमें इंक्लूड करना है जीवन में, तभी हम संसार और निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। किसी को छोड़ना नहीं है। Gautama Siddhartha, initially, he got very curious about the suffering, why there is suffering. Everywhere there is suffering. And he could not find even any person in the world who was not suffering in his experience, in his kingdom. And he himself was not happy because he could not have answers. So his pursuit to know the truth, the nirvana began because the suffering initiated him into finding the truth, our search for truth.
तो जो गौतम बुद्ध है, उन्होंने भी कैसे निर्वाण को पाया, वो भी इसी रास्ते पे, जैसे उनको लगा कि जीवन में हर कहीं जहां पे भी वो देखते थे, उन्हें लगता था कि हर जगह ही सफरिंग है। तो उनके अंदर सफरिंग ने ही वो शुरुआत करी निर्वाण को पाने की। वो सफरिंग ही हम सबकी शुरुआत है, वो पहली चाबी है जो हमें निर्वाण की ओर लेकर जाती है। कि तब उनको लगा कि नहीं, मुझे कुछ और निर्वाण को पाना है, सफरिंग ही है, तो वो उस निर्वाण को पा पाए। तो हमें इस सफरिंग को भी रिजेक्ट नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें वहीं ले जाना चाह रही है, हमारे अल्टीमेट गोल पे, जो निर्वाण है। What is coming in your way is the way. If illness is coming in your way, that is the way. If some financial struggle is coming in your way, and it is the way. And any negative experience of our life that is coming in our way, it's also, if we try to exclude it, it gets more intensified, comes back more and more. So important to embrace whatever is coming to us as an experience in our life. तो जो भी इस यात्रा में, हमारे यात्रा में जो भी आ रहा है, वो ही रास्ता है हमें उस निर्वाण को पाने का। चाहे वो बीमारी है, वो बीमारी एक रास्ता है निर्वाण को पाने की। अगर कोई हमारी फिनेंशियली हमारी प्रॉब्लम है, कोई पैसों को लेके कोई किल्लत आ रही है, वो भी रास्ता है हमें निर्वाण को पाने के लिए, तो आपके लिए ही है। तो उसे हम रिजेक्ट ना करें, क्योंकि जितना हम उसे पीछा छुड़ाएंगे कि इस इलनेस से कहेंगे कि ये दूर चली जाए, वो और आपके करीब आएगी। तो किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करना, किसी अनुभव को एक्सक्लूड नहीं करना। जो आ रहा है वो आपके लिए ही है, और वो एक दरवाजा है जिसे आप पार करके निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। That's right. It's a darwaja. That is the door. That's the portal. It's when you are embracing, when you are facing it, it opens the door to the wisdom, to know yourself more. You'll understand more then. तो ये दरवाजा है जो हमें अपनाना है। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे जीवन में, जो चुनौतियां आ रही है, तो जब हम इस चुनौती को पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि मैं तैयार हूँ, तो ये दरवाजा खुलेगा और आपको दूसरी ओर लेकर जाता है, जो है विजडम का दरवाजा, जो आप अपने आप के बारे में जान पाते हैं, जो अभी तक आप जान नहीं पाए हैं, और उस विजडम को, उस निर्वाण को पा सकते हैं। Gautam Siddharth has become Buddha because he could embrace everything as it is. He was not avoiding looking at the suffering. He was seeing suffering everywhere, and he called it as the first noble truth. Suffering is there everywhere. Samsara is full of suffering, and we need to see it, we need to feel it, we need to, when the experience comes to us, don't avoid it, don't run away from it. Even Mahabharata war, Arjuna initially want to run away from the battlefield. Oh, I can't throw the arrows at my cousins and my grandfather, the Bhishma Pitamaha, and he is trying to avoid the war and he want to run away from the battlefield. Krishna said, no, you can't. Face the reality. Face what is in front. You need to embrace what is in front of you. Don't avoid it. जो सिद्धार्थ है, जो गौतम सिद्धार्थ है,
वो कैसे बुद्धा बन पाए जब उन्होंने सफरिंग को स्वीकार किया। तो दोस्तों, सफरिंग को से हमें भागना नहीं है, लड़ना नहीं है, उसे जैसी वो है उसे वैसे ही देखना है। तो उन्होंने ये, गौतम बुद्ध ने ये पहला नोबल सिद्धांत जो बनाया कि एवरीवेयर इज सफरिंग, कि सफरिंग संसार में है और हर जगह आपको दिखेगी, तो वो एक नॉर्मल है, हम सबको उससे गुजरना है। वो एक रास्ता है गुजरने का, ताकि हम अपने रियल सेल्फ को जान पाए। अगर सफरिंग नहीं होगी तो हमारे अंदर ये इच्छा भी नहीं उठेगी कि इससे अलग क्या है, या एनलाइटनमेंट क्या है, निर्वाण क्या है। हम इन प्रश्न को नहीं जान पाएंगे। ऐसे ही महाभारत में भी अगर आप देखें कि जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में थे, तो वो तैयार नहीं थे तीर चलाने के, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि सामने मेरे परिवारजन है, मेरे ही बहन भाई है, मैं कैसे तीर चला सकता हूँ। तो तभी लॉर्ड कृष्ण ने उन्हें कहा कि जो सही है वो हमें करना है, कि जुड़ना नहीं है परिवार के साथ, रहकर भी हम जो सही है, जो सत्य है, उसको हमें करना है। इस समय जो हमारा धर्म है, हमें उससे करना है। तो इन सफरिंग को हमें भागना नहीं, इससे लड़ना नहीं, इसको पूरा स्वीकार, एम्ब्रेस करना है, स्वीकार करना है। So all that experiences, negative experiences of our life, which are nothing but giving to us some kind of pain, suffering to us, going to initiate us to greater, lessons. And we learn actually so many lessons from them. And it opens the doors of wisdom for us. तो हर सफरिंग का अनुभव हमें अपने ही स्वयं के स्वरूप से जोड़ने के लिए आया है। तो वो एक दरवाजे के जैसे है, जो एक विजडम का दरवाजे की जैसे है, जो हमें अपने जीवन में इस विजडम को लेकर आने के लिए आया है। तो किसी भी तरह की सफरिंग हमें बता रही है कि एक और स्टेप है, ये अंत नहीं है, यहीं से हमारी यात्रा का आरंभ होता है। And Buddha, Gautam Siddhartha asked himself, what's the cause of suffering and what's the root cause of suffering? Why it is there? How can we come out of this suffering? Is there anything that is beyond suffering? He questioned himself. He found the answers. He found the whole path. तो गौतम बुद्ध के भीतर ये प्रश्न उठा कि क्या ये सफरिंग के अलावा या इससे आगे भी कुछ है, या इस सफरिंग का क्या कारण है, क्या रूट कारण है, क्या जड़ है इस सफरिंग की, और क्या हम इस सफरिंग को पार कर सकते हैं, इससे उभर कर बाहर निकल सकते हैं। ये सब उनके भीतर प्रश्न आए और उन्हें एक रास्ता मिला। Finally, he found all the answers. He found the path and he was enlightened. He became enlightened being and he got an nirvana. His joy was boundless and it was not going away anymore. And the same thing which was bringing suffering to him is now completely different. He has new lens of perception. He is looking at the world with such gratefulness. Oh, this is the place where I was initiated. This suffering made me to realize certain great things. And he was dancing, singing, and he was rejoicing, he's celebrating. So after Nirvana, even Samsara, completely it alters a perception about Samsara because you will rejoice. Samsara is no more like a painful experience for you. Somewhere the tinge, the flavor of Nirvana touches the Samsara.
तो जब उनके भीतर ये प्रश्न उठे, तो जब उनको ये प्राप्ति हुई निर्वाण की, तो जब उन्होंने उस हर जगह जब देखा तो उन्हें एक जॉय, एक खुशी, भीतरी खुशी महसूस हुई। और उन जगह पर भी उन्होंने जहाँ देखा कि जब जीवन में बहुत सारी सफरिंग थी, तो उस सफरिंग के पीछे की ऊर्जा को जान पाए कि वो भी कहीं ना कहीं मेरे को मदद ही कर रही थी, सहायता कर रही थी इस निर्वाण को पाने की। तो संसार में सिर्फ उन्हें वो खुशी ही दिख रही थी, कोई भी दर्द वाली चीज या पेनफुल सफरिंग नहीं दिख रही थी, सिर्फ खुशी ही खुशी थी कि हर जगह, हर सिचुएशन, हर लोगों ने मुझे सहायता करी है इस निर्वाण को पाने की। तो इसे संसार को पूरी तरीके से उन्होंने एम्ब्रेस किया, स्वीकार किया और सेलिब्रेट किया। उसी में ही, खुशी में ही वो नाचते रहे, सेलिब्रेट करते रहे इस उल्लास के साथ, हर जन के साथ। So Gautam Siddharth has become Buddha, and after that he returned to his wife to share his experience. And his wife asked Buddha, "One, do we need to renounce the world? Do we need to renounce the spouse, wife, our children, in order to be enlightened, in order to attain nirvana?" Buddha answered beautifully. He said, "There's no need to renounce anything, because at that time I didn't have a roadmap. I didn't have any a clear map or path. I have to discover myself, all this. But the truth is, one can be in the home, one can be in the samsara and yet attain nirvana." तो जब गौतम सिद्धार्थ, जब गौतम बुद्ध बन गए, जब उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो वो वापस अपने संसार में जब वापस आए, अपनी पत्नी के पास आए, उन्हें मिले और उन्हें अपने अनुभव के बारे में उन्होंने बताया। तो उनकी पत्नी ने उनसे ये प्रश्न किया कि क्या जरूरी है निर्वाण को प्राप्त करने के लिए परिवार को छोड़ना? क्या जरूरी है निर्वाण को प्राप्त करने के लिए अपने पति या पत्नी को छोड़ना? और ये प्रश्न सुनकर गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छे शब्दों में उन्हें जो बताया, वो कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये सब छोड़ना है। पर तब मुझे ये रास्ते का मालूम नहीं था कि क्या रास्ता है निर्वाण को प्राप्त करने का। पर अब मैं जान गया हूँ कि घर में, संसार में रहकर भी हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। So, dear friends, samsara and nirvana are the two sides of the same coin. And initially, we don't see them as the same. We see them as two different things, opposite things, contradictory things. But as we start understanding about these two experiences, we also understand they are one and the same. They are integral parts of each other. They're intricately woven with each other. तो दोस्तों, संसार और निर्वाण दोनों पहलू है एक ही कॉइन के, एक ही सिक्के के दो पहलू है। पर ये दो पहलू को हम हमेशा पूरक देखते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट देखते हैं। पर ये ऑपोजिट नहीं है, ये दोनों ही एक इंटीग्रल, मैं कहूंगी अंदरूनी एक इंटीग्रल पार्ट है, हिस्से हैं एक दूसरे के और एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो दोनों एक साथ ही है। And you can actually be enlightened, be a nirvanic being, even by just even in the being in the material world, but with your practice, with your sadhana.
हम संसार में रहकर भी निर्वाणिक बन सकते हैं, पर उसके लिए हमें अपनी साधना को करना है। संसार में रहकर हमें अपनी साधना को हमें और प्रैक्टिस करना है, ताकि हम निर्वाण को अटेन कर सके, अचीव कर सके, या फिर उस स्थिति में बने रहे साधना के साथ। So, dear friends, today, um, the last day, Jaagriti program, and interesting topic about Samsara and Nirvana, and how important it is to even embrace Samsara, because even that makes you to even know how much this Samsara also played an important role to realize yourself in your journey to towards your enlightenment. Everything दोस्तों, is so important. Go ahead. यस, तो आज आखिरी दिन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कहूंगी, जरूरी टॉपिक है संसार और निर्वाण। और हम जैसे कहा कि साधना से हम ये कर सकते हैं, और संसार में रह के निर्वाण को प्राप्त करना, साधना को हमें कंटिन्यू रखना है, इसको बनाए रखना है, करते रहना है। और यही हमारा रियल कहूंगी सेल्फ है, स्वयं का रियल सेल्फ है, जो हमें खुद से ही जोड़ता है और बेहतर बनाता है। And we don't need to carry any kind of misconceptions, myths about samsara as something that is pulling you down and something that stops you. Nothing really can stop us in realizing our own self. So you have the physical part and non-physical part. If samsara is the physical part of our experience, nirvana is the non-physical or spiritual or soul part of us. Both together makes the wholesome experience. तो संसार और निर्वाण अगर हम देखें, तो ये अगर फिजिकल और नॉन फिजिकल की बात हो कि भौतिक क्या है, संसार है, और जो भौतिक नहीं है जिसे हम निर्वाण की बात करते हैं, तो ये दोनों क्या है, जब दोनों मिल जाते हैं तो कंप्लीट एक होल बन जाते हैं। तो नहीं तो अगर हम संसार में रहेंगे तो अभी हम वो आधे सर्कल में हैं, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ सर्कल। सर्कल तब कंप्लीट होता है, होल होता है, जब दोनों फिजिकल और नॉन फिजिकल साथ में रहते हैं। And dear friends, today is a great opportunity for us, all of us, to embrace all that is going on in our life and giving place for everything. Everything has its own place, including the roles that we are playing, different roles. Each one plays different role. Okay. If samsara, we take care of so many roles in samsara. But Nirvana says you are the soul. So we want to also constantly play out the roles, also realizing that we are the souls, role to the soul. तो हमें इन दोनों को एम्ब्रेस करना है, दोनों को स्वीकार करना है, फिजिकल और नॉन फिजिकल वर्ल्ड को, जिसे हम भौतिक और निर्वाण बोलेंगे, संसार को, दोनों को हमें स्वीकार करना है। और हमें लगता है कि संसार में हमें बहुत सारे रोल हैं, जो भी हम कर रहे हैं हमें उस चीज को स्वीकार करना है, चाहे वो रोल आप बेटे का, पति का, पत्नी का,
किसी का भी जो भी रोल आप कर रहे हैं, आपको वो सब करते रहना है, पर साथ में ये भी याद रखना है कि आप वो आत्मा है। तो रोल और सोल, ये दोनों को हमें साथ में रखना है कि मैं नहीं करने वाला, जो भी है मैं बस रोल प्ले कर रहा हूँ, पर भीतर जो मैं हूँ उसे भी याद रखना है। तो दोनों को साथ में लेकर चलना है। आप अपना काम भी करते रहें, रोल को भी पूरा करें, ड्यूटी को भी पूरा करें, और साथ में अपने रियल सेल्फ के साथ भी जुड़े रहें। If we get too identified with role, we'll be burned, we'll be exhausted, we'll be drained. And constantly we need to have this deeper self-remembrance that I am the soul playing this role. Beyond the role, I'm the soul, and the soul and role, they they're like interplay. They're playing with each other. अगर हम बहुत ज्यादा जुड़ जाएंगे अपने रोल के साथ, तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा कि हमें लगेगा कि हमारी अब बस हो गई, अब हम जलने लग गए हैं इस रोल को प्ले करने के लिए। पर उस समय हमें ये याद रखना है कि आप वो आत्मा है, वो सोल है। और जब हम ये याद रखते हैं, तो रोल फिर हमें वो एग्जॉस्टेड, जो टायर्ड हमें फीलिंग होती है, वो नहीं होगी, क्योंकि आप अपने सोल के साथ जुड़े हुए हैं। तो रोल में उस सोल को अगर आप इंक्लूड कर देंगे, तो फिर वो रोल नहीं रहता, फिर आप उसके साथ इतने अटैच नहीं रहते हैं, और आपको अपनी साधना से ये समझ में आता है कि कैसे मेरे को अपनी सोल को इस रोल में लगाना है। So today we all meditate. We have some time for meditation. So in this meditation, what we do is we embrace matter and spirit equally, the samsara and nirvana equally. तो हम इस समय ध्यान करेंगे और स्वीकार करेंगे दोनों चीजों को, संसार को और निर्वाण को अपने जीवन में। If you consider your one hand is material world, another hand is spiritual or the nirvanic world, we embrace both. Both are going to be very important. Both are very, very important. We bring them together. So first challenging part is embracing the all our material sufferings, because that's the challenge. Our defense mechanisms, our protection mechanisms, our running away from suffering, all things begins from there. Nobody wants suffering and want to run away, but we need to completely be okay, accept them, embrace them. Okay, I'm suffering right now. I acknowledge my suffering. A part of me also looking for answers, looking for solutions. We need to have this kind of inner attitude. तो संसार और निर्वाण आपके दोनों हाथों के जैसे हैं। अगर एक संसार है तो दूसरा निर्वाण है। इन दोनों को हमें जोड़ना है, और दोनों ही बहुत जरूरी है। तो हमें एम्ब्रेस करना है, दोनों को स्वीकार करना है। और सबसे कठिन जो हमें पाठ लगता है, वो है संसार को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना जैसे वो है। और संसार में दर्द भी है, संसार में सफरिंग भी है, तो उनको भी हमें स्वीकार करना है, क्योंकि चैलेंज वहीं पर ही है। हमें लगता है कैसे मैं अपने दर्द को स्वीकार कर सकती हूँ, कैसे मैं, जो मुझे चैलेंज कर रहा है, मेरे रिश्तों में जो मुझे तंग कर रहा है, कैसे मैं उसे स्वीकार कर सकती हूँ। आप जब स्वीकार करेंगे तभी आप उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, उस पेन से ओवरकम हो सकते हैं, उस सफरिंग को पार कर सकते हैं, ना कि उसे लड़के और झड़के। कि अगर हम झगड़ते हैं और उससे भागते हैं, आपको सिर्फ स्वीकार करना है जो भी आपके जीवन में चल रहा है, कि ठीक है, मैं तैयार हूँ,
उसे देखने के लिए मैं तैयार हूँ, उसे अपनाने के लिए। और फिर आप देख सकते हैं कि एक नई ऊर्जा, एक नए आप दृष्टिकोण से उस सफरिंग को देख पाएंगे, एक न्यू पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे आप उस सफरिंग को, जब आप उसे स्वीकार करेंगे। So let's all meditate for this 15 minutes. Let's all sit in a comfortable posture, dear friends. We have been doing this everyday meditation during this last 39 days. Today is the 40th day. Let's all now close our eyes together. It's a beautiful collective group meditation. तो इस समय हम सब तैयार हो जाए ध्यान करने के लिए। 15 मिनट के लिए हम सब ध्यान करेंगे। और आज 40वां दिन है। हम सबको पता है कि कैसे हम ध्यान करते हैं। और आप सब एक आरामदायक जगह पर बैठ जाएं और ध्यान की पोस्चर में बैठ जाएं और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। And I'd like you to notice your in breath and your out breath. इस समय आप अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांसों का भीतर आना और सांसों का बाहर जाना। Just stay in this present moment, this very moment. No need to think about anything right now. सिर्फ रहना है इस क्षण में, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ रहना है इस वर्तमान क्षण में। Watch your breath and also stay inside this body. अपनी सांसों पर सिर्फ ध्यान देना है और अपने शरीर में सिर्फ आपको रहना है। Let's embrace a body, a physical world, and all worldly experiences that we had, which includes pain and suffering. इस समय अपने शरीर को स्वीकार करें। ये शरीर आपका संसार है और इस संसार में जो भी अनुभव आपने पाए हैं, चाहे वो दर्द के हैं या सफरिंग के, उन्हें भी स्वीकार करें। हर अनुभव को स्वीकार करें। Notice if there is any inner resistance that's showing up where you are pushing away certain things. You could not accept certain things in your physical world, in your physical body. देखें कि क्या कोई ऐसा अनुभव है जिसे स्वीकार करने में मुझे तकलीफ हो रही है, या मैं अपने आप को पीछे कर रहा हूँ उस अनुभव को स्वीकार करने के लिए।
देखें क्या संसार को स्वीकार करने में मुझे कहीं झिझक है। इस शरीर को स्वीकार करने के लिए कोई झिझक है। Allow yourself to be okay with whatever that's related to the physical body and physical world. Just be okay with everything as it is. अगर संसार को लेकर या फिर इस शरीर को लेकर जो भी हो रहा है, उस अनुभव को लेकर उसके साथ बने रहे, उसको कहें कि इट्स ओके। In that okayness with all experiences of samsara, the material existence, birth, death, pain, pleasure, joy and sadness, all kinds of experiences, be okay. जब हम ओके कहते हैं या इस ओकेनेस के साथ हम अपने अनुभवों को स्वीकार करते हैं, तो ये ओकेनेस हर अनुभव को स्वीकार कर लेती है। चाहे वो गम हो, चाहे वो खुशी हो। At this moment in this meditation, I would like you to go towards the experiencer of all kinds of experiences, positive and negative, in the samsaric plane, in the material plane. Go towards that experiencer who is experiencing all things. इस समय अपना ध्यान उन सब अनुभवों पर लगाए, चाहे वो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। उन सब भावनाओं पर, उन सब फीलिंग्स पर लगाए जो आपको इस संसार में मिले हैं। उनकी तरफ जाएं, उन सब अनुभव की तरफ। और उन अनुभवों को एक दृष्टा के जैसे देखें।
दूर से देखें कि कोई और उन अनुभवों को महसूस कर रहा है और आप उसे देख रहे हैं। Who is feeling? Who is thinking? Who is experiencing? With this question, I would like you to direct your attention towards that witness deep within you, the observer in you, the witness in you. जब आप उन अनुभवों को देख रहे हैं तो अपने आप से ये प्रश्न करें कि कौन है वो जो इनको अनुभव कर रहा है। क्या वो मेरा सही स्वरूप है? इस प्रश्न को अपने भीतर और गहरा लेकर जाए। कौन है जो ये अनुभवों को एक्सपीरियंस कर रहा है? Just be a silent witness to what is around you, what is happening in you, around you. जो भी इस समय हो रहा है आपके आसपास या आपके भीतर, उसे सिर्फ देखें। Allow yourself to embrace now that witness who is witnessing everything, the experiencer, the real experiencer who is experiencing everything. At the same time, embrace all the experiences too. Embrace all that whatever happening you in you. अपने आप को पूरी तरह से अनुमति दें। अनुमति दें स्वीकार करने की। स्वीकार करें उसे जो इन सब अनुभवों के पीछे है, जो सिर्फ देख रहा है इन अनुभवों को। और उसे भी स्वीकार करें जो ये अनुभव हो रहे हैं।
सब अनुभवों को स्वीकार करें। Just be yourself right now. सिर्फ रहें इस समय में जैसे भी आप हैं। Another 3 minutes, I'd like you to gather all the insights that you have received from your own experience. Gather all those realizations and insights now. आखिरी 3 मिनट। जो भी इस समय आपको अनुभव हुए हैं, उन सब अनुभवों को, उन सब इंसाइट्स को आप अपने भीतर इकट्ठा करें। कोई भी एक अनुभूति जो आपको अपने बारे में बताती है, उसे भी इकट्ठा करें। Nirvana and Samsara, all those experiences of Samsara, all those experiences of Nirvana, just embracing them, all of them, both of them equally, without excluding anything, not excluding anything. जो भी अनुभव है, अनुभव संसारा के या अनुभव निर्वाणा के, दोनों अनुभवों को स्वीकार करें। सम्मान भाव से संसार और निर्वाण को स्वीकार करें। Another 1 minute. आखिरी 1 मिनट। In that stillness and silence, watching the breath, staying in this moment, staying alert.
अपने भीतर की स्थिरता पर, शांति पर, अपनी सांसों पर बने रहे। This is the time to return to this waking state, dear friends. Embracing your inner world and also equally embracing the outer world, the world that you see and feel and hear and taste and touch. And take your time to slowly open your eyes. समय है अब धीरे धीरे वापस आने का और पूरी तरह से स्वीकार करने का अपने भीतर संसार को और अपने बाहरी संसार को। बाहरी संसार में जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, सबके साथ, इन सब अनुभवों के साथ धीरे धीरे वापस आते हुए, अपने साथ अपने अनुभवों को लेकर आते हुए अपना समय लें। And slowly you may open your eyes, dear friends, with a smile. धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं एक मुस्कुराहट के साथ। That's beautiful. Welcome back, friends. Welcome from your inner world. So beautiful. आप And सबका स्वागत है अपने भीतरी संसार से बाहर आने का, बाहरी संसार में। and 40th day we are celebrating today, and it's so good all of you joined today, the last day, and please continue whatever that you have learned from all teachers, acharyas, everyone, all who shared with you their life experiences, their wisdom that they gathered. Please continue the practice. तो बहुत खुशी है कि आज 40वां दिन है और दोस्तों आपको ऐसे ही अपनी साधना को करते रहना है। जो भी आपने इन 40 दिनों में सीखा है, डिफरेंट हमारे मास्टर जो भी आए थे, फैसिलिटेटर्स आए थे, उन सबसे जो उन्होंने ज्ञान हमें दिया है, उस ज्ञान को अब हमें अपने जीवन में उतारना है और इस साधना को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना है। And also don't forget singing and dancing, celebrating every day in your life. और भूलना नहीं है दोस्तों, साधना के साथ हमें डांस भी करना है, नाचना भी है, एंजॉय भी करना है जीवन को, तभी पूरी ये कंप्लीट होगा। साधना के साथ सेलिब्रेशन भी है।
the closing ceremony, we will have few words from some of you who are participating every day. And I request, I see Kavita ji, I see Jayesh ji. Can some of you can speak? Dr. Jayesh, I could not attend your class, but can you please share some words on this closing ceremony? सर, ये बहुत ही उम्दा अनुभव था, और जो बुद्धिमत्ता, विजडम हमें आपसे मिली है, उससे एक चीज तो नक्की हुई है कि तय हुई है कि मेरा हिंदी काफी इम्प्रूव हुआ है। हिंदी बहुत में अच्छा। काफी सुधार आया है, बहुत सारे शब्द अपने आप निकलने लगते हैं, और जो भी अनुभव लोगों के साथ शेयर करने में और बांटने में बहुत ही आनंदमय अनुभव था, और सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमारे हृदय को बहुत डीपली छुआ है, और हमें भी बहुत प्रोत्साहित किया है कि और भी जीवन में लाइट और लव और एकत्रता और लाए। और ये तो आप डॉक्टर न्यूटन बताते हैं, अनएंडिंग प्रोसेस है, प्रोसेस ज्यादा इम्पोर्टेंट है डेस्टिनेशन से। सो इसी का आनंद हम जरूर लेंगे सर, जरूर लेंगे। और सभी पार्टिसिपेंट्स का जो फीडबैक मिला है, सब आचार्यों के लिए बहुत ही गहरा अनुभव और बहुत ही एंजॉयबल अनुभव था सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर। Oh, धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर जयेश जी। वंडरफुल, वंडरफुल। ये जब भी ट्रांसलेट कर रहे थे तो भी मेरे दिमाग में आ रहा था कि और कैसे, और कौन सा शब्द हो सकता है इसके लिए। तो इट हैज क्रिएटेड अ फैंटास्टिक इंटरेस्ट इन हिंदी। वाओ। तो मुझे याद आया, जब भी इन्होंने बैल बोला तो मुझे वो सिनेमा याद आया, सांड की आंख। और बुल और बैल के बीच में क्या फर्क हो, मुझे अभी जब भी वो बोल रहे थे तभी मैंने इन्वेस्टिगेट किया कि बुल और बैल के बीच में क्या फर्क है। सांड और बुल के बीच में, बैल और सांड के बीच में क्या फर्क है। वेरी इंटरेस्टिंग। और हिंदी में बहुत ही ऐसे लगता है जैसे घर से बोल रहे हैं हम। बहुत बहुत वेरी नाइस एक्सपीरियंस। And thank you, Shubhangi. It's excellent translation. Yes, fantastic. It's fantastic translation. थैंक यू Thank you, सर। thank you. अभी मैं खुद सीख रही हूँ, यही एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इस चीज को मैं और अच्छे से कर पाऊँ और हिंदी की डिक्शनरी में ऐड ऑन कर पाऊँ। तो ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। Thank you. And can Kavita ji share? Okay. डॉक्टर न्यूटन, थैंक यू वेरी 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 मच। बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस 40 दिन की जर्नी के लिए ही नहीं, बट QLU की तरफ से पूरे सारे जो मैंने कार्यक्रम आपके वर्कशॉप्स अटेंड की हैं, हर एक अनमोल एक मेरी जिंदगी में एक अनुभव रहा है। और ये 40 दिन की जो यात्रा है ये ऐसी अद्भुत है, मेरे को लगता है मैं ये फिर से 40 दिन की यात्रा फिर से पूरा रिवाइज करने वाली हूँ हर एक दिन, क्योंकि हर एक टीचर और हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर आया
उसने इतने अनमोल विजडम हमको दिया है, इतना अनमोल ज्ञान दिया है, और इतनी सुंदर तरीके से ये एक जर्नी करवाई है सांसों के जरिए, और इन सबको आगे ले लेकर मुझे लग रहा था इट इज अ नेवर एंडिंग जर्नी, एंड ऐसे ही चलते रहे, नॉट ओनली फॉर 1 hour एवरी डे बट ऑल द आवर्स, ऑल द डेज, 24/7 इसी ही अमृत में हम लोग रहें। और आपकी तरफ से जो आए हुए ये एक बहुत ही मतलब डॉक्टर न्यूटन, आप जानते हैं मैं आपकी तरफ रखती हूँ वो भावना कि आप लिविंग बुद्धा हैं, और एक लिविंग बुद्धा के जरिए से हमको ये एक ज्ञान का पूरा सागर कंटिन्यूसली मिलता जा रहा है, एंड हर टाइम हमको कुछ ना कुछ नया चीज मिलती है जिससे हमको लगता है कि नहीं, यही नहीं, और भी आगे कुछ है, और भी कुछ है आगे। और इट इज अ रिजुविनेशन प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, complete transmutation of our energies from suffering to enlightenment। और जैसे आपने आज ज्ञान दिया कि हर एक सफरिंग को एम्ब्रेस करने के साथ हमको एक विजडम का पोर्टल खुलता है, तो इट इज लाइक एम्ब्रेसिंग आवर शैडो सेल्फ, वी आर एम्ब्रेसिंग आवर शैडो सेल्फ, वी आर एम्ब्रेसिंग आवर सफरिंग, वी आर एम्ब्रेसिंग एवरीथिंग विच वी थॉट वाज नॉट करेक्ट एंड विच वाज नॉट राइट, एंड उसको जब हम एम्ब्रेस करते हैं तो हमको एक ज्ञान होता है कि एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज फाइन, एंड ईश्वर को हमारी तरफ से कुछ भी कंडीशंस नहीं है, एक अनकंडीशनल लव है, एंड दैट अनकंडीशनल लव जो हमको एक अनुभव होता है आपके जरिए से भी और इस ज्ञान स्तोत्र के जरिए से कि इट्स ऑल अनकंडीशनल, हमको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग ऑलरेडी एनलाइटेंड है, हम लोग सब एनलाइटेंड है, और इस चीज को हमको बस अपने में जागृत करना है कि हम लोग सब लोग, ईच वन ऑफ अस, हर क्षण एक जो जी रहे हैं, एक एनलाइटनमेंट के साथ ही जी रहे हैं, एक अनुभव के साथ जी रहे हैं। इट्स अ कॉस्मिक शॉप, एंड हम इस कॉस्मिक शॉप से एक्सपीरियंसेस वी आर गेनिंग, we are earning experiences, we are saving and storing for us. So it's a beautiful journey, and thank you so much. It is absolutely extraordinary. Thank you, and मैं बस चाहती हूँ डॉक्टर न्यूटन हमेशा आपकी एनर्जीज के साथ जुड़ी रहूं किसी ना किसी तरीके से। I want to say that I am available all the time in any way. I would love to be associated in whatever way. Thank you very much. Thank you, Dr. Kavita. You are part of this entire QLU Sangha, part of this entire beautiful, the mission or whatever that is taken up. And we're all together, we will expand this. Yes. Thank you, Dr. Kavita, for this. So, dear friends, it's so wonderful. And Kamaljit ji, can you share your feedback? And you can unmute. Yeah. Namaskar, sir. Namaskar, Kamaljit ji. I'm so happy. I'm so overjoyed right now. I can't even explain. And thank you so much for this beautiful opportunity. I attended the wake-up call last year, 40 days, and fortunate enough to attend this year as well. And beautiful experience with beautiful people. अभी का जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड है, अभी मेरे दिमाग में एक स्टेटमेंट आ रहा था कि दिस एक्सपीरियंस इज नथिंग बट टॉकिंग अबाउट spiritualism and God, and then being speechless about spiritualism and God, and there is nothing beyond this. So
when you live in samsara, you keep talking about many things, but when you try to go close to that stage where you feel that you're going to attain nirvana, I think you go speechless. What's required, only feelings, and that's enough. और आज के सेशन में एक बात मेरे दिमाग में बार बार जो आ रही थी वो ये थी that whatever topic was taken in these 40 days, if we do not understand the importance of living fully in samsara, because that is our playground. If I have to practice nishkam seva, that can only be done in samsara. If I have to practice gratitude, that is only possible with take up any other topic, for example forgiving myself and loving people and all the other topics. That is only possible when I am here in the physical plane, and I have to take it together with my soul by playing my role here in the samsara. So thank you so much. I'm overjoyed, and I release my intention in the universe today, at this moment, to meet you personally very soon, very, very soon. And I want to serve QLU Sangha in whatever way I can. I tried for like few days with Harika ji, but I couldn't do that. Maybe, I don't know. But I release my intention today. So I really want to meet you in person, and I would like to serve QLU in any way possible. Thank you so much. Thank you. Thank you. You're most welcome. Thank you. That's wonderful. Thanks for feedback. It's excellent. Excellent. So, dear friends, thanks for expressing your thanks and gratitude in the chat box, and also many through your laughter with smile. And we will all wave our hands. We'll switch on the videos, and we can say goodbye to each other. And we warmly welcome to QLU campus in Hyderabad. And this program, you might be knowing already about Soul Coach or Transformation Program. You're most welcome to be part of the program or to serve, to volunteer in whatever way. You're most welcome. And please continue the practice of whatever that you have learned, implement them. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Harika, for moderating. She has done an incredible job, and every day for 40 days, she was coordinating, she was holding the space. And thank you, Harika. Thank you, entire QLU team, entire QLU Sangha, and Gauravji, particularly Gauravji in the background, and such a beautiful role that you played. So your blessings are above everything. Keep inspiring us, be with us. May the QLU and the future programs take the human consciousness collectively to the next level. And I pray all the light masters to bless this noble, truly human work we are here for, that you have inspired in us. Thank you so much, sir. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Okay, friends, and goodbye for now. And see you all in meditations or dreams or in reality in physical body somewhere, sometime. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Hitesh, Shubhangi.